बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर मकदम है आप सभी नाज़रीन का जो हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं और जिन्होंने इस मैच का जो पहला हाफ है उसका आनंद लिया। तो हम अपने नाज़रीन को फिर से बताते चले जो अभी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खैबर प्रीमियर लीग का। यहाँ पे आज एक और मैच हो रहा है, नोवेल्टी वर्सेस आर्को फुटबॉल क्लब। तो अभी जो आर्को है इस फर्स्ट हाफ में अपनी बढ़त बनाए हुए है, 2 गोल्स तो उन्होंने दागे हैं, 2 गोल्स। तो नोवेल्टी का जो टीम है वो अभी एक भी गोल करने में कामयाब नहीं हुए। तो आर्को ने पहले हाफ में ही अपना दबदबा नोवेल्टी पे बनाए रखा है। तो देखने वाली ये बात होगी कि जो सेकंड हाफ है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कई गेमों को जो सेकंड हाफ में पलटा गया, कल भी देखा गया। पहले हाफ में जो जेके बैंक एकेडमी है उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखा था, उसके बाद जो उनकी अपोनेंट टीम थी सेकंड हाफ में उन्होंने गेम को ही पलट दिया और उनका जो दबदबा था वो क्रैक करने में वो कामयाब हो गए और फिर अपनी जीत भी यहाँ पे दर्ज कराई। तो अब जो आज नोवेल्टी वर्सेस आर्को भी चल रहा है, तो फर्स्ट हाफ में जो आर्को है उन्होंने अपना जो 2 गोल उन्होंने जो दागे हैं नोवेल्टी के खिलाफ, तो उन्होंने अपना दबदबा यहाँ पे बनाए रखा है। तो देखने वाली ये बात होगी कि सेकंड हाफ में नोवेल्टी आर्को के खिलाफ क्या करती है या आर्को अपना जो दबदबा है वो बरकरार रखने में कामयाब रहेगी। तो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं मसूद साहब। तो मसूद साहब आपका खैर मकदम है। थैंक यू वेरी मच। तो जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो आज का गेम है तो क्या लगता है आपको जो सेकंड हाफ है क्या नोवेल्टी इस प्रेशर को क्रैक कर पाएगी या आर्को ही अपना प्रेशर बनाए रखेगी? एक्चुअली बहुत अच्छा मैच चल रहा है नोवेल्टी और आर्को के बीच में और दोनों टीमें बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को बीट करे। और बट यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ कि आर्को की टीम है वो बहुत ही कंबाइंड टीम है और बहुत सालों से इकट्ठे खेल रहे हैं और बहुत ही तजुर्बा है उन प्लेयरों में और उनका हाइट और फिज़िक बहुत ही मैटर करता है यहाँ पर। और एक्चुअली टेक्निकली अगर देखा जाए तो कुछ प्लेयर्स नोवेल्टी में बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बट अभी तक यही स्कोर है कि 2-0 आर्को की टीम जीत कर हैं। बट जो नोवेल्टी का प्रॉब्लम ये है कि वो फाइनल थर्ड में कंबाइन नहीं हो रहे हैं, बट और जो वो उनकी पासिंग जो है वो इंटरप्ट हो रही है और 1-2 पास करके ही उनसे बॉल स्नैच किया जाता है और जिससे कि उनकी वो वीकनेस बन रही है गेम में। और कोच को ये चीज़ देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ और उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली उसको प्लान बना के वो अच्छे से उस प्लान को एग्जीक्यूट करे। और आई होप कि नोवेल्टी विल कम बैक। एंड जैसे कि आपने सही बोला कि कल जो एकेडमी की टीम थी वो बिछड़ रही थी, वो जीत रही थी, बट देन यू सी सेकंड हाफ में गेम ही पलट गया फर्स्ट। सो फुटबॉल इज अ गेम ऑफ यू कैन गेट एनी टाइम ए चांस एंड टिल लास्ट 90 मिनट्स यू कैन नॉट से एनीथिंग। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने जो फर्स्ट हाफ का जो गेम है वो खुद देखा है, तो कहाँ कहाँ पे आपको लगा कि नोवेल्टी की जो टीम है उन्होंने कहीं पे गलती की है जिसकी वजह से वो अभी फर्स्ट हाफ में एक गोल भी दागने में कामयाब नहीं रहे? एक्चुअली जो आपने गोल्स देखे वो बिल्कुल फ्री मैन उन्होंने छोड़ा और गोलकीपर की गलत पोजीशन थी। और अगर गोलकीपर अवेयर होता और गोलकीपर मैन टू मैन मार्किंग करता तो शायद वो गोल नहीं होते। बट अभी यही है कि सेकंड हाफ में देखा जाएगा कि कैसे आर्को की टीम अपनी लीड को और लीड कर सकती हैं। और बट जो नोवेल्टी की टीम है वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको गेम में जो फाइनल थर्ड में जो उनकी प्रॉब्लम है वो पेनिट्रेट नहीं हो रहे हैं अपोनेंट के इस हाफ में। और आई होप कि उनके पास काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं कि जो इस लीड को उतार सकते हैं। और हम देखेंगे अभी सेकंड हाफ में कि क्या होगा इंशाल्लाह। तो क्या ये तो बात सच है कि यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है? एक गलती से आप गेम में पीछे जा सकते हैं और अगर आप जोर लगा सकते हैं तो उस गलती को सुधारने में अभी भी आपके पास वक्त है। तो वक्त सेकंड हाफ का अभी भी है, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अब इनकी, क्योंकि अभी भी इनके पास टाइम है। तो जो उन्होंने गलती अभी तक की है, खासकर गोलकीपर की बात करें, तो क्या कर सकते हैं वो? फुटबॉल इज़ द गेम ऑफ मिस्टेक्स एंड उस मिस्टेक को रिपीट करके अगर आप रिपीट करोगे तो फिर आप और गोल्स खाओगे। अगर उस गलती को आप सुधारोगे और उसको ओवरकम करोगे तो आप अपनी टीम को जिता सकते हो। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो राइट साइड है उनका नोवेल्टी का वो वीक हो रहा है, उनको जो विंगर हैं उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और जो डिफेंस हैं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, दे आर नॉट कंबाइंड और उनका कम्युनिकेशन इशू आ रहा है। कम्युनिकेशन, फुटबॉल में कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एक दूसरे के साथ हम बात नहीं कर सकते तो देन वी लैक कम्युनिकेशन और अपोनेंट आके
हमारी कम्युनिकेशन बैरियर को तोड़ के वो गोल कर सकते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से बात करें। अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उसको गलती करके उसको ये अप्रिशिएट करें कि नेक्स्ट नो प्रॉब्लम, डोंट डू अगेन, बट उसको डीमोरलाइज करके उससे और गलतियां हो सकती हैं। इसलिए यही चीज़ है कि वो अपने डिफेंस को स्ट्रांग करे और जो मिड जोन में वो पासिंग करे और पासिंग करके वो फाइनल थर्ड में पेनिट्रेट करके वो आराम से गोल कर सकते हैं। क्योंकि आप एक्सपर्ट गेम के बारे में बेहतर जानते हैं, तो क्या लगता है आपको यहाँ पे जो एडवाइस रहेगी, या आपने बोला कि जो अगर कोई गलती करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये गलती आप, ताकि वो गलती दोबारा न दोहराए, तो कम्युनिकेट क्या इस में हो सकता है? अगर यहाँ पे मैदान में जो खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हैं तो खेल के दौरान कम्युनिकेट कर सकते हैं? खेल के दौरान बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कोचिंग में बिल्कुल एक हमारा मेन कोचिंग पॉइंट रहता है कि जो प्लेयर्स शुड कम्युनिकेट ईच अदर। This communication is not only verbal, this communication can be action, this communication can be eyes. तो आइज में आइज से भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है, एक्शन से भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। और वो जो लैक किया ना नॉवेल्टी का, कि जैसे कि पासिंग, प्लेयर यहाँ पास मांग रहे हैं तो रॉन्ग साइड में, और पोजीशनिंग और जो गैप्स हो रही हैं, गैप्स उनके बीच में जो डिफेंस में गैप्स हो रही हैं, वहाँ से स्नैच करके बॉल्स वो ले रहे हैं, और जिनकी वजह से उनको गोल्स पड़े। और आई होप कि नॉवेल्टी विल कम बैक। फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, और आई होप कि वो इस मैच में वापस आए और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा फिर। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि आई होप कि वो इस मैच में वापस आए। तो एज एन एक्सपर्ट, जैसा कि आप इन गेम्स को देख रहे हैं, इन जो ये टीम्स हैं, इनको बगौर आप खुद जानते हैं कि इनका क्या कैलिबर है, कहाँ पे ये खेलते हैं, कितना प्रोफेशनल तरीके से ये खेलते हैं, तो क्या लगता है आपको एज एन एक्सपर्ट, इन दो टीमों में से आज का बादशाह कौन बन सकता है? अगर देखा जाए तो नॉवेल्टी काफ़ी सीनियर टीम है और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से टीम है, और आर्को एफसी तो बहुत सालों से यहाँ पर खेल रही हैं और इनको बड़ा तजुर्बा मिल रहा है श्रीनगर में खेल के। और काफ़ी ये टीम बहुत कंबाइंड टीम है। देखो, जैसे हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ना, कम्बिनेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि नॉवेल्टी में कुछ नए प्लेयर्स हैं जो कंबाइन नहीं हो रहे हैं टीम में, बट आर्को एफसी में 5 साल से 4 साल से मैं यही प्लेयर्स देख रहा हूँ, और इनका कम्युनिकेशन और कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जिस वजह से कि ये टीम जीत रही है, आगे बढ़ रही है, और इनका कम्युनिकेशन और कम्बिनेशन अच्छा है। दैट इज़ टेक्निक एंड टैक्टिक्स बोथ आर करेक्ट। एंड मुझे लगता है कि आर्को एफसी इस मैच में और भी आगे जा सकता है, बट आई एक्सपेक्ट कहाँ भी कुछ नहीं जा सकता है। इफ़ कोच विल मेक ए राइट प्लानिंग, नॉवेल्टी मे बी कोच हैज़ 2-3 प्लान्स। इफ़ वन प्लान इज़ फेल इन फर्स्ट हाफ, मे बी ही विल मेक सेकेंड प्लान और मे बी सम चेंजेस, आई थिंक। तो हो सकता है कि वो वापस आए। तो ज़्यादा तो जो आपने बताया कि कम्युनिकेशन गैप एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है गेम में। अगर इस कम्युनिकेशन गैप को भरा जाए, दूर किया जाए, चूँकि आपने बताया कि जो आर्को के प्लेयर्स हैं उनमें आपस में उनका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर है, तब जाके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन जो गैप है, वो किस नज़रिए से आप इस कम्युनिकेशन को देख रहे हैं इस गेम के लिए? देखिए, जैसे आर्को एफसी में मैं देख रहा हूँ डिफेंडर्स सेम लाइन देख रहा हूँ 4-5 साल से, मिड जोन एक साथ खेल रहे हैं, एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और नॉवेल्टी का क्या है कि सीन के अभी कुछ प्लेयर्स नए हैं और इनको जेल होने में बड़ा टाइम लगता है, और दे नीड एटलीस्ट 10 to 15 सेशंस। तो टीम के साथ वो प्रैक्टिस होती हैं, उस प्लेयर से वो बोला जाता है कि आपको इस टाइम पे ये करना है। वही प्रॉब्लम आ रहा है नॉवेल्टी का, कम्बिनेशन उनका बड़ा कमज़ोर है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कम्युनिकेशन और कम्बिनेशन। अभी यही डिपेंड करेगा कि कोच की स्ट्रेटजी से आएगा, दैट इज़ ऑल। तो अब देखने वाली ये बात होगी कि कोच की क्या स्ट्रेटजी होगी, सेकंड हाफ में उनको क्या बताया जाएगा कि अपनी स्ट्रेटजी वो कैसे चेंज कर पाएंगे, और क्या वो इस गेम को पलटने में कामयाब रह सकते हैं, या इस गेम में अभी भी जो आर्को का दबदबा है वो बरकरार रहेगा। तो ये देखने वाली बात होगी। मसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम अपने नाज़रीन को बताते चले, जो खिलाड़ी हैं ब्रेक के बाद जो सेकंड हाफ शुरू होने वाला, खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं, और बहुत जल्द यहाँ पर फिर से जो सेकंड हाफ है वो गेम शुरू हो जाएगा, और उसका जो लाइव
ट्रांसमिशन है अब तक पहुंचाया जाएगा। तो हम अपने नाज़रीन से गुजारिश करेंगे आप हमारे से जुड़े रहिए, जो खेल आधा अभी खेलना बाकी है उसका भी आप आनंद लीजिए, और देखने वाली ये बात होगी कि सेकंड हाफ में इस गेम का बादशाह कौन बनता है, या आर्को या नोवेल्टी। तो तब तक जब तक ये गेम शुरू होगा और उसके बाद फिर से मैं आपसे मुखातिब होगा, तो उसके लिए मैं अपने नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और इस गेम का आनंद लेते हैं। मैं आपसे फिर से मुखातिब होऊंगा गेम ख़त्म होने के बाद, और दीजिए तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त। आपको और हमारा अल्लाह निगहबान। So yes, we were talking about the Arco's FC and Novelty FC team, which is locking their horns. Yes, it is the second session of this match. It is the match number 12, which is right now going on between Arco's and Novelty. The man in yellows and blue, it is the Arco FC, and the man in orange, it is Novelty FC. Yeah, it is Arco's FC which are leading the charts with 2-0, and let's wait and watch. Will the Novelty FC team will gonna come back in the match, and we have to wait and watch for that. So it is the outside players from the Novelty FC. It is Arjun, Pankaj, Abhishek Negi, and they are the players I think from outside the state. It is one more over that's Ankit Singh as well, who might be belonging to here. And talking about the players which are in the Arco's gallery, so there are not too many players who might be from outside, and it is going to be a nice session, so we are hoping so as well. So we have tasted the Khyber lassi here, both Shafi and me, and it is very tasty and it is very delicate, delicious. And let us see, it is the buttermilk which we have had here there for some feast by the Khyber products, and we have enjoyed it. So let us wait and watch, and we have lost the screens here, so that's why we are back. And until we will be back, we will give you the update that it is Arco's FC who are leading the charts here. So will the Arco's FC go on to the defending side, or will they attack still? That is we have to wait and watch. So what are your views on to it? Will they gonna defend, or will they gonna strike as they were before in the first session, Shafiq Para? But so far it looks like that Arco Football Club has taken a complete section here. Is going to be a chance for them, and super the goalkeeper comes forward, ball will straight go back to the defender just in a sizzling way sends the ball straight to the sidelines, center line. In fact, the ball has been well taken off. It has been and straight in the penalty box area. There's going to be chance for the Novelty, and it has been well blocked, and ball goes straight away to one more player from the Arco Football Club. He receives the ball very beautifully, and ball goes in fact towards one more player. It's going to be a chance for them. Can they convert this one? The ball is just hanging around the penalty box area. That's going to be a danger. The ball is just into the mix-up that has been well taken away, and that was a strong simulation by the player before he could have received the ball. Ball is going straight to the sidelines. One more player comes from the Novelty Football Club. He sends ball straight to the right out. Right out is having a chance. Can that right out get a goal here? But no, before he could have received the ball. Not a good anticipation from the right out as ball goes straight away. In fact, outside the touch line, that is going to be throw in favor of Novelty Football Club here. Novelty Football Club is going to get a throw in. Throw comes. Let's have a watch over it. He comes forward. He's thrown in straight in the penalty box area. That was well blocked by the defenders of the team of Arco Football Club. The danger is tackling around the goal mouth of this Arco Football Club. Can Novelty get a goal here? Let's have a back over it. All the players are walking towards the center of the penalty box area, the most sensitive part. There we go. Can this corner kick ignite some hopes for the team of opponents? That is Novelty Football Club. Inshallah, this is going to be a corner kick. Corner kick comes in favor of Novelty Football Club. A ball has been placed. It looks like to be a left out comes into the action. Let's have a look. Can he be the best in the business? No, he does not. And ball goes just outside the touch. In fact, the bylines. It's going to be a goal kick that goes straight away into the favor of Arco Football Club. Arco taking the match forward by 2-0 against Novelty Football Club. Yes, absolutely. It was a very chance over there for the Novelty FC to throw one into the goalposts, but still they have to wait for some time. So it is the Novelty FC. They are just trying to forward it, and they are
comes the player out from the center back, and he puts it forward to the other comrade here, and it is once more they have to wait for some time to have their goal, first goal here. And whistle has been once more blown by the match referee there in the center of the ground. Meanwhile, ball has been hanging around there. It's going to be a superb show. Can he create a move here? That's not well. Whatever Masood before few days mentioned here that once you are building up again, just in between from the defender to the midfielder, from mid zone to the centre forward, the all important thing is that you need to finish it off. You need to penetrate it. That's not happening so far for the team of Novelty Football Club. It's one more whistle. Yes, that hasn't. We haven't seen that so far because the Novelty FC players have tried hard in the first half as well. There were three chances which they were unable to convert into the goals. And all those 3 chances have been left in waste by the team of Novelty Football Club. And this time ball once more skids away to the touchline. His throw in comes in favor of Novelty Football Club. Novelty Football Club is one of the players comes forward. He was brought down, and this is one more Arco Football's player. He takes it forward and gently pushes it, and it's a backheel pass straight away to one more player. In fact, if comes from the team of Novelty Football Club, this is a lateral pass. Lateral pass could happen and can create some chances and opportunities for the team of. Can we have some sort of hope for the team of Novelty Football Club? It is going to be a good tussle at the end. He makes a sizzling move, but anticipation from the team of Novelty Football Club was absolutely as worst as the opposite of that shot, and it was absolutely contradictory, and eventually the result is ball is just chipping over the crossbars. One more kick in favor of Arco Football Club. Once again they have got the chance here, but that too has been wasted by the Novelty FC players. These 2 chances was very nicely the kick by the player who was there in the sideways, but once again the Novelty FC has to wait here for some time. But here one of the Novelty players here feeling some pain in his head on the left side. Hope he will be better. So Irshad, let's have a chat in Urdu as well for a while for the entertainment of the crowd, because a lot of the people across the world, across Jammu and Kashmir, are not able to decode the language of English, and we are not the Englishmen, we are the Kashmiri people, so sometimes my heart is also palpitating for my own language, but that is very difficult to speak out in Kashmiri language. That's a very tough task for any commentator to do the commentary. Assignments only in Urdu. Yeah. So that's why we haven't been able to speak in Kashmiri, but yes. और तमाम देखने वालों को बताएंगे हम कि आज के इस मैच में, जो आज एक ही मैच हो रहा है, और यहाँ पर दीवार खड़ी की गई है कश्मीर आर्को फुटबॉल क्लब की तरफ से, तो 2-0 के बढ़त यहाँ पर ली है आर्को फुटबॉल क्लब ने. Meanwhile, this is going to be one more chance for the team Novelty Football Club. Human ball has been created. It's going to be a big mess here, and many of the timers, they are making things very hard for themselves. Let's have a deck on it. It's going to be a straightforward collection for the defender. In fact, for the goalkeeper, he comes forward and he will not be hesitated, and he gets the ball very comfortably and sends straight away to his center line. Before the ball passes it, one player comes from the opponent's team, makes a header has been sent back to the circles. This is called as chipping. Once the ball does not takes the ground and you are hitting the ball, that chips it away and chips it beautifully, and this is a magnificent passing by the Novelty, but they have been brought down many times by the team of Arco Football Club. Look at Maraj is a seasoning man. He is the line coming out of the jungle there. Let's have a deco on it. It looks like to be a handball kick, and Maraj, once he falls down, he has touched the ball, and that is going to be a big agony for the team of Arco Football Club. He had created some chances for the team. Eventually, what happened? That handball kick goes in favor of Novelty Football Club. Yes, one more opportunity there was for the Arco's FC, but Maraj has just touched it with his hand, so there was a certain chance which could have become in favor of the Arco's FC. Not happened then, and it is once again the throw in which comes in favor of the Arco FC. So let's wait and watch, but it is all the show of Arco's here, and they have been able to hit 2 goals, and
it is the Novelty FC who are lagging behind with 2 goals. And let's wait and watch here. And here on the Novelty Football Club, if they want to win the match, then they need to blaze out all the guns there on the field, and this is going to be a commendable and a commanding position by the team of Novelty. Let's have a move. This is going to be a sizzling gun. The ball has been just trapped by the player that was in between the rectangular area. That has been well cleared away. Danger is hovering around the goal mouth of the team of Arco Football Club, because before it could have gone straight into the posts. The ball is just chipping away for another. What an absolutely fantastic passing that was from the right out of the Novelty FC, but it was the striker who didn't be able to convert it into a goal. And once again, Novelty FC players are taking it forward. Number 18 will create a chance here, but it has gone out of the byline. So there was a possible chance for the Arco's FC players. It will be the corner kick comes in favor of the Arco FC. So will they convert this chance, as already they have hit 2 goals, and it will be the 3rd one, but he passes it surface to his striker. Striker just tries to pass it to the who was standing in front of the goal post there. One of the comrades from the Arco's FC throw in once again will come in favor of the Arco's FC. So let's wait and watch. It is going to be hotter and hotter. The players from Novelty FC too got some energy, as they might have drunk the Khyber dahi milk, and they might be in energy as well in the second half, and everyone would be loving to be in. So far, the contest looking to be a blow. Gentlemen, this is going to be a chance of ball straight away into the build box here. Once more, ball has been going, in fact, straight away to the sidelines. Let's have a look over it, and the cameraman is just trying to rotate the camera as well. There's a magnificent camera work by Mr. Javed Saab, the managing director of Frisk Film Productions. Meanwhile, this is the player from the Novelty Football Club. His left footer sends ball straight to the one more player. It was just skidding away. Ball has been make a good header there. In between 2 players, number 11 comes and he just takes all the chances and creates some sort of hope for the defenders, and sends the ball one more straight to the defender. Defender is tackling it forward. He sends beautifully to it in front of the rectangular area. Is going to be a chance? No, because the defender from the opponent's team, that is from the team of Arco Football Club, comes out like a lion and rescues the side. It's one more thrown in, and through comes in favor of Arco Football Club here. Arco, they are taking a lead of 2-0 against Novelty Football Club. Novelty Football Club need to apply some gimmick, and they need to have some technical strategies there in the game, and because there is not much time in the match, as we are heading towards the end of the match. We are straight away into the second half of the match as well. Ball is straight to the number 56. He just chips it away, passes to the left out, sends the ball straight into the rectangular area. This is going to be a chance. Can he convert before it could have sent into the back of the nets? Goalkeeper comes and he just pounces on it, doesn't allow the ball to go into the back of the nets. It's one more chance that has been wasted by the team of Novelty Football Club. This is not going to be best in the business by Novelty Football Club. This is a horrible and terrible day for the team Novelty. They are being jinxed many times. It's a simply ill-fated day for the team of Novelty. And once again, the goalkeeper, what an absolutely fantastic work done by him. He's just acting like a lion to his team, and once again he hasn't even given it a corner to the other side. Here comes the player from Arco's FC, is taking it forward beautifully, and 17 is the number on the back of his jersey. Is trying to forward it. It's the Wasim, and Wasim passes it to the number 12, and he forwards it to the other player there. The passing too has been beautiful from the Arco's FC players. He took it forward. Will he gonna get a chance here? No, it hasn't, and it has gone out of the line. So absolutely, the match which is right on now, going between Novelty FC and Arco's FC. Arco is leading with 2 goals against the Novelty FC. It is the Irshad, from talking about the world commentators, there are some beautiful commentators in international cricket as well as in football. Talking about the football, I love really
Peter Drury, one of the fantastic commentator. My favorite too. And in cricket, we have some spectacular commentators in India and in across the globe as well. But presently, there are some superb commentators who are doing a commendable job. But in IPL, in best Urdu and Hindi vocals, we have Akash Chopra. Yes, he is everyone's favorite. Yes, he is jack of all, and we have got a very good analyst, a very fantastic sports analyst. That is Harsha Bogle, and we are missing the voice of. My favorite is English commentator Nasir Hussain. Oh, what an analyst he has been from past decade for the English team and for the other teams. He is very fantastic analyzer. Actually, he's having a very melodious voice, very attractive voice. Too, yes. My favorite commentator was Ian Smith as well from New Zealand, but he has retired. But as far as your voice looks, you are trying to follow Bangla. Yes, for me, Bangla is my favorite commentator. He's African continent, commentator. Is also a very fine commentator. Yes, absolutely. He's Zimbabwe. Michael Holding has taken the retirement from international commentary. One of the superb sports analyst. As a great commentator, we'll be missing him. Now new cricketers who played for Australia, New Zealand, England, like Michael Clarke, Shane Warne, some other players, Nicholas, some superb commentators. But for me, my favorite commentator has been Tony Greig in cricket, who gave the name of Rawalpindi Express to Shoaib Akhtar. And Tony Greig was looking absolutely superb when he was doing the commentary on world's greatest ever batsman. That was Sachin Tendulkar. During his last days, he was doing mostly the commentary in the South Asian countries like in Sri Lanka, Pakistan, India. Although there has been no cricket in Pakistan from a decade or so, so he was doing in commentary mostly in Sri Lanka, and he passed away in 2012. It was Tony Greig who passed away. Such a beautiful voice as Tony was, as he was your favorite, and yes. Meanwhile, and my favorite is also Ravi Shastri. I'm really following him, and Ravi Shastri has been superb commentator, and I still remember, and his words are still echoing. This is going to be a chance. Can they create a sizzling more? And once more, anticipation was absolutely missing there. Eventually, one more disaster for the team. Novelty Football Club, they are lagging by 2 goals as Arco. They have already taken lead of 2-0 in the first half of the match. I was talking about Ravi Shastri. Dhoni finishes it in style in 2000 World Cup. These are the words echoing across when Mahendra Singh Dhoni lifted after 28 years the World Cup trophy. That was a dream for the country, and what a captain that Indian soil has ever produced in form of MSD. A great finisher, wonderful batsman, as well as one of the greatest ever finisher, and best behind the wickets. MSD is a big name. So let's come back towards the ball. Here comes the corner kick, which goes in favor of the Novelty. And talking about the football, so coming out of the cricket scenario, we're simply in the game of football here, so maybe some fans might be getting irritated by discussing about cricket here, but we're talking just generally about sports here, rather than to take a specific a thing on a particular thing. I want to see, I will just mention it that in football there are a lot of commentators, but Peter Drury is a kind of a commentator who is trying to ignite some entertainment. He's generating euphoria, generating excitement in the ground. So the kind of energy that Peter Drury is having, he sees such a sizzling voice in the com box for all the footballers. There we have the match referee. He is warning all the players of Kashmir, Arco football. That's not going to be good thing for the team. This is Wasim Harun. It looks quite outrageous. That looks absolutely short-temperedness. Not a good sign in this form of the game. Yes, and there are so many players who are short-fused, and this is not a good thing for the player. Yes, what they are doing, man, it is not a good sign in the middle of the field, and they are. It is 5:47 on the clock here. We are in the Khyber Premier Football League 2021 in synthetic turf PRC in Srinagar. In the heart of the Srinagar, in fact, today the two teams have, locked up their horns. Novelty is taking on Arco Football Club. One more player, in fact, he's a youngster, looking like a youngster. He is going out of the scene, and this is the 4th time that Novelty FC's player has been injured here in the middle of the ground. And match referee is trying to educate the players there, educate to all the, teammates as well.
and each of moments do happen in the game of football. That's its nature, that's its character, and that's what it is all about. But I think you are being tested when you lose something. I think, Shad, I believe personally that your temperament is being tested whenever you lose anything, because there are so many players across the world at domestic, national or international level. Once they lose a match, their temperament is being tested because they lose their temper. And if you win the match, after that your emotions are stable, you are emotionally quite happy for that. So that thing is not being tested, because you will try to respond each and every person positively. But at the same time, if you are losing the match in football, in cricket or any other sport, at that time your temperament, your technique, all the things, your attitude is being tested. Shafi, I will gonna tell you one thing. There's a universal saying that empty vessels makes much noise. So जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. तो उसी तरीके की यहाँ पर एक मैंने इस वक्त ली है, क्योंकि इंटरनेशनल जो फुटबॉल है उसमें जो दो दिग्गज फुटबॉलर्स है, चाहे वो लियो मेसी हो जिसने 500 से ऊपर के गोल्स किए हैं, चाहे वो that is huge. Lionel Messi from Argentina, I guess. He has been, yes, he's from Argentina, and Portugal has also produced the greatest ever. Meanwhile, it's going to be one more chance for the Novelty Football Club. There's going to be one more big antagonists for them once they got an opportunity in form of a corner kick that has been well taken away, and now all the penalty box is quite vacant, and they are trying to evacuate the side very quickly. Arco, the defending line has been quite energetic, very frenetic, and they're playing with zeal, zest, and they're playing with quite enthusiasm. Yes, we were talking about that. These two footballers have been throughout their life, throughout their career, been the cool as a cucumber. So that's why they have been successful. They are the players only in international football who have just crossed over 500 goals, one from Portugal and other from Argentina. So yes, these players do need to be too calm, because if they don't be so, yellow or red card can be shown by the referee. And during nights, Irshad, there is also the Positive Champions tournament being organized here at the synthetic turf. Meanwhile, this is going to be a chance one more, and Arco is with jersey number 15 comes to rescue the team and trying to send the ball and bang it into the rank of the nets. Before he could have sent, he was well obstructed. A barrage of defenders came to rescue their side from the Novelty side, and there is no damage done. Novelty continues with nils. Arco continues with 2 on the board here. Yes, absolutely. It is going to be the corner kick which comes in favor of the Novelty. In fact, it is the Arco's FC. Will they gonna took it into the post? No. The goalkeeper comes out and he just slides it and took it out of the nets. And once again, it is the Novelty FC which has to wait, and they are yet to open their account. It is, and this time surrounds it beautifully. It's just popping in the air for a while, and ball just once landed, it just skids away. Ball has been once more sent straight and passing the center line. A few players comes just staying into the circle there, and that side has been made quite vacant now. Simulation comes from number 6 from the team of Arco Football Club. He sends ball straight to his Novelty player comes there. Novelty is one of the scorer comes before he could have sent ball into the nets. One more chance has been wasted by the Novelty. Novelty finishers need to change their strategy, and they need to be more energetic, and they need to be more athletic. I personally believe, it's not only my personal belief, but this is the universal belief. This is a universal thought of everyone, that if you want to go in sports, first you have to be a very great athlete. Talking about Virat Kohli, Mahendra Singh Dhoni, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Tiger, Mohamed Salah, and one of the greatest ever, that was from the America. I don't remember his name quite well. They were at the top of the list, who were the greatest ever athletes of the world of sports. So in sports, any type of format you have, I think first and foremost thing is you must be a wonderful athlete. I just heard one of the interviews of Virat Kohli. He was saying that I have 7 hours of the workout, so in every day, whenever I am playing or not, this is my routine, that I am going for 7 hours workout. Who is gonna do that? I think you are mistaken here. I think Virat Kohli is a type of
athlete. He is only sleeping 5-6 hours. After that, he is always in workout. So in cricket, he is in workout. After that, he works. Yeah, I understand, but I mean to say that Virat Kohli is highly indulged in any type of activity. So he is such a greatest ever player that Indian soil has ever produced after Tendulkar. And so straight away coming into the football here, we have some legends of our own Union Territory of Jammu and Kashmir as well, talking about Mr. Abdul Majid Kakru, the first Indian captain, ex-footballer from our Jammu and Kashmir Union Territory, who represented India as a captain. That is not an easy job. You are representing a country which is having a population of 1.25 billion as per census 2011. So that is something, matter of honor and matter of great pride for anyone. So similar thing happened for Parvez Rasool in cricket. Now Umran Malik comes back, a new man, a new player from cricket fraternity, and works in the. This was a superb simulation. Great stop there by the Novelty FC player, but he was there. Look, it's going to be a penalty in front of Novelty is getting a penalty here. Yes, Novelty is getting straight over, no hesitation for the match referee there. Yes, let us wait. And Novelty is evoking a good response from the match referee there. Oh, that is quite nasty for the team Arco Football Club. If he won, the team of Arco, Novelty Football Club are not able to get a goal here, I think they need to do more practices at their separate time. Yes, absolutely. So let us wait and watch. This will be the penalty kick. So the goalkeeper is giving by some lessons by the other players there, and he has been such a swift and he has been acrobatic all during the game. And let's wait and watch. Will this penalty kick be the first goal for Novelty FC? And we have to wait and watch. So let us see what will happen over here. It is the penalty kick which comes in favor of the Novelty FC. Will they gonna open their account here, or still they have to wait for some time, because not too much time is left in this game, and it is going to be the last minutes of this game. And will Novelty FC be able to equalize the situation, which is right now at 2-0? And it is the first time, in fact the fourth opportunity. First they've got the three opportunities, and it was the goalkeeper of the Arco's FC who has done a tremendous work for his team and kept them away from scoring any goals here. So let us wait and watch. It is yet the referee hasn't blown his whistle yet, so goalkeeper is just taking his position into the goal line, and he goes. So let's wait and watch which side this kick will gonna go. So let's have a wait whether it is going to be a Panenka or not. Who's going to be a Panenka man there who is going to deliver a penalty here? Arco footballers are here. And there we go, it's going to be a penalty, and that has been straight away sent into the back of the net. He's just enjoying, coming out with the ball and takes the ball forward, and Novelty are back into the business, gets the first goal, scores are now not with a huge difference. It's now 2-1 on the equation there. Yes, Novelty got the opportunity for the fourth time, and this time they didn't lose any chance, and they straight away hit it into the nets. So they are off the mark, and it is the 2-1 score now. So Novelty, without losing any time, the player who hit the goal, and he came back with a fire to put that into the right position. So Irshad, this penalty was brought to you by Frisk Film Productions on ANN News and presented by AMRL Labs and Shamrock, powered by Arise Hyundai. Khyber Premier Football League 2021 is one of the biggest ever leagues of JKFA in collaboration with Jammu Kashmir State Sports Council. The ball is popping in the air. He goes a hopping pass straight away. Whistle has been blown. This is going to be one more chance, and that was straight away over to the bars. One more kick comes in favor of. Let's have a look over it. Is going to be defender's kick, and goalkeeper places the ball for himself just on the edges of the small. And he puts the ball in a right position. The player from opposite side, it is the Novelty. The Novelty FC, they quite knew it now, because the more they're heading towards the end of the match, the more pressure will be coming out on their nervous now, because they know it very importantly how important this game would be for them. So every team will be playing 7 games, and tournament is comprised of 15 teams, and there will be 59 matches. That is
That fixture has been absolutely fantastic. Talking about the JKFA's, the way of organization by JFA Srinagar as well, and there are a lot of people working in JKFA team who put a very wonderful fixture. Yes, who is interesting in organizing such tournaments, but J&K, it is that all appreciation goes to Jammu and Kashmir Football Association and yes, JK Sports Council, who providing some opportunities at even giving such gaps and just not Novelty is coming with a bang now, and they get good energy now after getting a goal on the last moment here. This section looks to be in favor of now Novelty, because Novelty should take this goal very forward and try to channelize the energy in a positive way. Is a naughty goalkeeper. Is such a naughty goalkeeper. Unbelievable, to be very honest, unbelievable, incredible, and he was totally, playing and. Yeah, once I decoded that comment from the social media that he's been called as the Cobra Baramra, and he was looking like that, and the efforts that he put within the iron there, that was absolutely magnificent, and he was such a fantastic. And we cordially welcome and very warmly welcome the core committee member of this Khyber Premier Football League, Mr. Irshad Saab. This is Mr. Shabir Saab. Mr. Shabir Saab, we really welcome you in the Combox and have a few minutes with we people. It will be really a great pleasure and honor for we people. Honor for us if we can have Mr. Shabir Ahmad Shah, who is just marking his presence in the Combox. So we have the few minutes with him. It is over to Mr. Shabir Ahmad Shah. First of all, Shabir Saab, I really I want to appreciate your efforts. It's not only me who is appreciating, but I believe that all the people around the social media who are hanging there, they have been appreciating the efforts of this JKFA as well as the Football Premier League that is happening for the first time. So once more, you are back in the Combox. We have been waiting for you a lot of time, but you have not given your time. But finally and eventually, you have made your presence. So first of all, welcome in the Combox. Thank you very much. You are doing a wonderful job. Sir, honor. This is as a team we are working, and you people are the most important for us. You are doing a very great job. You are entertaining spectators. You are entertaining our viewers, and your this point to point जो आपकी कमेंट्री हैं बहुत ही अच्छी जा रही है. Sir, to be very honest, I wholeheartedly congratulate you. Sir, to be very honest, these words will function as a tonic for us, and it will boost up our morale in the Combox, and it's our really honor that we have been part of this ANN as well as Frisk Film Productions here, particularly in the league which is being organized by JKFA here. So, Shabir sir, what was the actually basic motive to organize such a big event, which is actually first of its kind here at the turf, synthetic turf TRC Srinagar? Can you elaborate that particular thing to the viewers on the ANN News? Actually, ट्रांसपेरेंसी का मसला है यहाँ पे. हर हमेशा जहाँ भी आप देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी का एक बड़ा इशू रहा है पहले से ही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर क्रिकेट भी एज अ स्पोर्ट्स आप देखेंगे कि उसमें भी बहुत सारे जो ये हमारे जो ये हैं क्या कहते हैं प्लेयर्स हैं, वो कहते हैं कि हमें चांस नहीं मिल रहा है, हमें क्या कहते हैं कि हमारा जो कारकर्दगी है वो आगे नहीं बढ़ रही है. कोई जो अंपायर होता है, कोई जो रेफरी जिसको बोलते हैं यहाँ पे रेफरी बोलते हैं, या कोई क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी या ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो कहती हैं कि हमें फुल्ली चांस नहीं मिलता है कि जैसा कि हम अपने आप को प्रूव करें कि वी आर नॉट क्या कहते हैं कमी हम में कुछ नहीं है, बल्कि हम दुनिया के किसी भी खिलाड़ी के साथ किसी भी टूर्नामेंट में आगे बढ़ सकते हैं. तो हमने इस पर थोड़ा सा गौर किया और कहा कि एज़ पर प्रेजेंट सिनेरियो, एज़ पर प्रेजेंट सिचुएशन, एज़ पर प्रेजेंट चैलेंजेस कि हम क्या कर सकते हैं. तो हमने 2-4 बंदे इकट्ठे आए, तो एक टीम बन गई जिसमें से हमारा हेड जो है जावेद साहब, जो कि फ्रिस्क फिल्म्स प्रोडक्शन में आपको पता ही है. जावेद साहब का रोल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही
बहुत ही ज़बरदस्त रहा है अभी तक। और हमने ये सोचा कि हम किस तरह से हम इसमें जो हैं जो नयापन लाएंगे और जो प्लेयर्स हैं उनका जो ये कैलिबर है, स्किल है, हर कोई एंगल जब हम देखेंगे एक प्लेयर का वो सामने कैसे आएगा। क्योंकि हमने देखा कि सबसे पहले इसको जब हम लाइव करेंगे इट विल बी द बूस्ट टू द प्लेयर्स, टू द रेफरीज, टू द ऑर्गेनाइजर्स, टू द कॉरपोरेट, हमारा जो है कॉरपोरेट जो सोसाइटी है हमारी कॉरपोरेट्स, उनके लिए भी चांसेस मिलेगा कि दूर दूर से लोग उनके जो एडवर्टाइजमेंट हैं वगैरह जो हैं वो भी आएंगे लाइव टीवी पे। और आप जैसे लोग जो होनहार लोग हैं आप जैसे जब आएंगे यहाँ पे तो हमारे जो एंकर हैं मुंतजिर साहब, ठीक है, आप देखिए कि वो किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं रोज़ बरोज़, और किस तरह से उनका जो ये जो प्रेजेंटेशन जो है किस तरह से रोज़ बरोज़ इंक्रीज़ हो रही है। और इसके साथ साथ जो हम कहेंगे कि ये कन्फाइन जो है सिंथेटिक टर्फ पे ही नहीं रहेगा, बल्कि इसका पर्पज़ है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये होना चाहिए। इस तरह के टूर्नामेंट्स, इस कैलिबर के टूर्नामेंट्स हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ सिंथेटिक टर्फ से ही प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, बल्कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट से जब प्लेयर मिलेंगे, जब नेचुरल टर्फ से जब मिलेंगे, तब हमारा एक जो है सेटअप बन जाएगा। और उसके बाद जब हम इस पे काम करेंगे, कुछ मैचेस अभी हो गए हैं, मुझे लगता है आज 12th मैच है आज, तो 12th मैच है, तो फिर दिस इज सक्सेसफुली कि हमने लाइव कर दिया इसको। और हर कोई आपके सामने आ रहा है कि चाहे उसने जम्मू कश्मीर को एट नेशनल लेवल रिप्रेजेंट किया, आप देख रहे हैं उसको टीवी पे इस टाइम घर में बैठ के देख रहे हैं, चाहे हमारा इंटरनेशनल प्लेयर है आप इसको लाइव देख रहे हैं, इसके तासुरात क्या हैं वो देख रहे हैं, चाहे हमारे जो डिपार्टमेंट्स की टीम है उनके तासुरात क्या हैं खेल के बारे में, उनको क्या क्या चाहिए, उनको किस किस तरह से चाहिए वो आप देख रहे हैं। रेफरीज के, एक्सपर्ट्स के कमिटीज, आप लोगों का जो तालमेल रहा या इसके साथ, तो हर किसी लेवल पे हम कह रहे हैं कि कहेंगे कि एट प्रेजेंट सिनेरियो जो हमारे चैलेंजेस हैं किसी हद So, तक sir, I would like to hold you here for a while. This is the goal number 3 which comes from Arco FC, and once again it is the Arco FC who have been able to throw once again into the goal post. So this is the goal number 3 comes in favor of the Arco, and what an absolutely blinder he has sent into the posts. This is the goal number 3, and on the last moments of the game, and we have here Mr. Shabir Ahmad Shah, and we are talking to him about this league. And yes, Shabir Ahmad Shah, sir, you are saying that this was actually the cover-up which we have given to the players. They were just trying to, you are actually trying to hunt out the talent, that unhiding talent from Jammu आप and देखिए Kashmir. ये गोल हो गया, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, किसी को पता नहीं थी, किसी को पता नहीं चल रहा था। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम लाइव देख रहे हैं कि देखिए किस प्लेयर ने, जर्सी नंबर क्या है इसका, तो फिर इसका नाम क्या है, ये सामने आ रहा है, इसपे वीडियो भी सामने आ, है, इसका वीडियो भी बन सकता है। इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि दिस इज नॉट अ नॉकआउट टूर्नामेंट, वी ऑप्टेड अ लीग बेस्ड खैबर मिल्क प्रीमियम फुटबॉल लीग। इट इज अ लीग, दैट मीन्स कि प्रॉपर चांस मिलेगा हर टीम को, हर किसी टीम को प्रॉपर चांस मिलेगा, हर किसी प्लेयर को कि अपना कैलिबर दिखाने के लिए, टू से हिज कैलिबर। और हर किसी रेफरी को, क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं होता हूँ नीचे कि आई एम ऑब्जर्विंग द थिंग्स एंड इट इज़ अ फीडबैक फॉर अस, एंड वी आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स, एंड वी क्या कहते हैं, हम नोट करते हैं कि हर चीज़ को नोट करते हैं कि किस तरह से क्या हो रहा है। तो रेफरीज का इम्प्रूवमेंट कि इतना बढ़ गया है कि ये लाइव देखते हैं, यहाँ पे लाइव हो रहा है, तो फिर हमारा डिसीजन जो है वो करेक्ट होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, हर लिहाज से सही होना चाहिए। और हम इस माध्यम से, इस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को चांस भी मिलना चाहिए, हर किसी प्लेयर को चांस, जिसको भी शौक हो, जिसको भी स्पोर्ट्स, जिसको कहते हैं कि स्पोर्ट्स कल्चर, जो स्पोर्ट्स कल्चर घर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो मैंने पिछले भी कहा और आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि हम ये चाहते हैं कि ये अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के साथ जो अपना स्पोर्ट्स है, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अपना स्पोर्ट्स, अपने प्लेयर्स, अपना ग्राउंड घर में देखें, ज़रूर देखें अपने बच्चों के साथ, और वो वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा बच्चा किस सिमत में जा रहा है, क्या ये
पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि ये किसी गलत काम में नहीं तो जा रहे हैं, दे आर ऑब्जर्विंग, दे हैव अ चांस। उनके लिए भी हमने ये प्रोग्राम रखा है, क्योंकि ये आफ्टरनून में स्टार्ट होता है, लेट नाइट तक होता है, ये 7 बजे तक। वी आर प्रिपेयरिंग टू दिस स्टार्ट दिस सेशन, दीज क्या कहते हैं, मैचेस इन फ्लड लाइट्स आल्सो इंशाल्लाह फ्रॉम इन नियर फ्यूचर। तो मुझे लगता है कि उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ ये बहुत ही बेहतरीन जो ये स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल, तो अपने बच्चों के साथ, और उनका भी एनकरेजमेंट हो जाएगा, और मुझे लगता है कि वो भी ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि देखिए यहाँ पर जो गोल हुआ है उसके बाद जो हमारे जो जावेद साहब है, जो जिस अंदाज में उन्होंने वो रिप्ले दिखाया है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी ज़्यादा लाइव किया, काफ़ी मैचेस लाइव किए जहाँ पर मिलियंस व्यूज़ हुए थे, लेकिन ये किस्म का जो कैमरा वर्क है और ये किस्म की जो प्रेजेंटेशन है केबल नेटवर्क पे, ऐसे में एक खिलाड़ी को ये बार बार नज़र आ रहा है कि मैंने क्या गलती की या मैंने क्या अच्छा किया। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि जैसे कि आपने कहा कि लीग है, मुझे लगता है कि अराउंड 7 मैचेस हर टीम को मिलेंगे, क्योंकि 59 मैचेस है, जिसमें 4 फिर सेमीफाइनल्स में चले जाएंगे और वहाँ पर 2 मैचेस होंगे और आखिर में एक फ़ाइनल भी होगा। तो 7 मैचेस में यहाँ पर जो आर्को है, उनको वो मैंने उनको देखा पिछली बार, वो कह रहे थे कि हम लाइव पे देखेंगे नोवेल्टी को, ताकि हमें पता चलेगा कि उनकी वीकनेस क्या है और उनकी स्ट्रेंथ भी क्या है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट। और उस हिसाब से जो ऐसा लाइव होना केबल पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, मुझे लगता है कि दिस इज अप्रिशिएबल के साथ साथ एक काफ़ी ज़्यादा ये इट वर्क्स अ लॉट फॉर द टीम्स। ये रिप्ले से और लाइव होने से ये हुआ कि प्लेयर देखेगा कि मैंने कहाँ पे गलती की, किस तरह से, और मुझे इम्प्रूवमेंट कहाँ पे लानी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने दिया है कुछ सोसाइटी को, हमने दिया है, हमने लाइव मैचेस सोसाइटी को दिए हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उनका रेस्पॉन्स इतना अच्छा होना चाहिए। इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इंशाल्लाह, और सो फार वी आर एक्सपेक्टिंग, और हमने इस टाइम भी इस वक्त तक भी देखा, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जब ये लीग जो है आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह फ्रामा, इससे भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। और हमने देखा कि आउटसाइड इंडिया में भी हमें जो है कमेंट्स मिले हैं, तो फिर हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, और ये भी उम्मीद करते हैं कि इसके बाद भी वो अपने ख्यालात जो हैं, अपने कमेंट्स जो हैं हम तक पहुँचाएँगे, ज़रूर पहुँचाएँगे। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि गोल हो गया, तो फिर वो कैसे हुआ, मैं बाहर था, एक ने उधर ही कहा कि जरा ये खोलिए लाइव रिप्ले दिखाएंगे, रिप्ले दिखाएंगे। दैट इज आल्सो एडिशन टू दिस, इट इज अ फैंटास्टिक एंड अ वेरी वैल्यूएबल इनोवेशन। शबीर साहब, दूसरे पेशे से आ रहे हो, तो मुझे लगता है कि यू आर नॉट बीन इन द स्पोर्ट्स योर इंडल्जमेंट्स, बट एज मैं कहूँगा कि दूसरी यू आर ऑल्सो सर्विंग दिस सोसाइटी इन डिफरेंट वे। तो क्या ख्याल है दिमाग में कि एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगे स्पोर्ट्स में और टैलेंट को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, तो इन चीज़ों को साथ में काफ़ी फैमिली असाइनमेंट्स होती है, फैमिली प्रेशर होता है, और आप और स्ट्रेस में हैं लोग, तो ऐसे में आपने अपने आप को किस तरह पेश किया है फुटबॉल की तरफ? एक्चुअली मेरा अपना भी क्लब एक चल रहा है, जिसमें मैंने 3 पार्ट्स रखे थे, फुटबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट। तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे क्रिकेट थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है फुटबॉल से, लेकिन मुझे लगता है कि पॉपुलर ज़्यादा फुटबॉल ही है। पॉपुलर नो डाउट क्रिकेट ज़्यादा लोग खेलते हैं, लेकिन पॉपुलर ज़्यादा फुटबॉल ही है यहाँ। अर्शद साहब, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी। मैं क्योंकि मैं काफ़ी वाबस्ता हूँ स्पोर्ट्स से, लास्ट टाइम मैंने एक बच्चे से बात की, उससे मैंने कहा कि आपने फुटबॉल क्यों चूज़ किया, आप में क्रिकेट का काफ़ी ज़बरदस्त टैलेंट है। उसने कहा कि देखो मैं तकरीबन 4 साढ़े 4 तक मजदूरी करता हूँ, फिर मैं 6 बजे फुटबॉल खेलता हूँ, तो फुटबॉल इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग गेम है ही नहीं, इकोनॉमिकल है और काफ़ी छोटे समय में इसको खेला जाए, और क्रिकेट यू हैव टू बी देयर थ्रू आउट द डे। तो ऐसे में फुटबॉल जो है ये काफ़ी एक बेहतरीन खेल है, आप दिन में काम भी करो और आखिर में आप एंजॉय भी करोगे इसको। एक्चुअली जो क्रिकेट था उसमें ज़्यादा स्पॉन्सर्स आए थे, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा आया था। एक्चुअली हम ये कह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फुटबॉल, दैट इज़ वाई कि क्रिकेट जो है वो ज़्यादा आगे। So we have to say that it is the end of the match here. So Arco's FC has taken a lead and they have won the match even against the Novelty FC with 3-1. Thank you. Okay, sir. And they have won the match against the Novelty FC with 3-1. So we are signing off from here. It is goodbye and see you tomorrow.
वेल नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे और उस खेल का आपने आनंद लिया। नॉवेल्टी वर्सेस आर्को, हम अपने नाजरीन को ये बताते चले, जो आर्को ने पहले फर्स्ट हाफ में 2 गोल दागे थे और नॉवेल्टी उस टाइम कोई गोल करने में कामयाब नहीं रहा था, तो लेकिन ये अपेक्षा लगाई जा रही थी कि जो नॉवेल्टी की जो टीम है सेकंड हाफ में इस गेम को पलटने में कामयाब होगी। जो उन्होंने आर्को ने उन पर प्रेशर बनाए रखा था, उस प्रेशर को वो क्रैक करने में कामयाब होंगे। लेकिन नॉवेल्टी ने जब पहला गोल किया तो ये लग रहा था कि शायद नॉवेल्टी इस सेकंड हाफ में जो अपना कमबैक करेगी, लेकिन जो आर्को है उन्होंने फिर से एक गोल दागा और जो अपना दबदबा है नॉवेल्टी पे फिर से बरकरार रखा। तो जो नॉवेल्टी है खाली 1 गोल इस गेम में कर पाई और जो आर्को है उन्होंने 3 गोल इस गेम में दाग के जो इस गेम का उस पे अपना कब्जा जमा लिया। आज के जो विनर हैं वो आर्को करार दे दिए गए और आर्को के जो मोहम्मद सलीम मलिक हैं उनको मैन ऑफ द मैच करार दिया गया है जूरी की तरफ से। तो जो यहाँ पे मोहम्मद सलीम मलिक, मैं आपको यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, जो प्रोफेसर बशीर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के, वो इनको मोमेंटम पेश करेंगे। और बिलाल साहब भी यहाँ पे जो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी खड़े हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद सलीम मलिक, आपका खैर मकदम है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आपको मैन ऑफ द मैच करार दे दिया गया है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत खुशी महसूस हो रही है। अच्छा, ये बताइए, आप जब नॉवेल्टी ने पहला गोल सेकंड हाफ में दागा तो आपको लगा कि अब शायद गेम हमारे हाथ से निकल रहा है? थोड़ा सा लगा तो मगर टाइम था कम। लेकिन आपने फिर से मेहनत करी और जो आपका दबदबा था उसको फिर से बनाए रखा। जी सर। तो क्या मैसेज रहेगा आपका? आप इस क्रेडिट किसका देना चाहेंगे? कोच, कैप्टन, प्लेयर्स? कोचेस को। मेनी थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बशीर साहब, प्रोफेसर बशीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं। आपका क्या कहना है इस गेम के हवाले से, क्योंकि आज नॉवेल्टी वर्सेस आर्को था और आर्को ने अपना जो दबदबा है फिर से सेकंड हाफ में भी बनाए रखा, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आर्को की टीम है कि बैलेंस टीम है, इनका लाइनअप बहुत अच्छा है। दे आर प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल। साइमल्टेनियसली जो हमारे ये क्या कहते हैं कि नॉवेल्टी स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं, दे आर आल्सो ट्राइड वेरी वेल। पहला आपने देखा कि पहले मुकाबला ऐसा लग रहा था कि शायद ये बैलेंस्ड, इवनली बैलेंस्ड मैच था। थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट किया इन्होंने, प्रेशर एक्सर्ट करके थोड़ा दोनों टीमें मुकाबलतन अच्छा खेली, बहुत अच्छा खेली, एग्रेसिव फुटबॉल हुआ। तो मगर उनका जो था, देखिए जो होता है माइट इज़ राइट। ये जो आर्को की टीम थी, मैंने पहले भी बोला, थोड़ा सा एक्सपीरियंस टीम थी इन कंपैरिजन टू नॉवेल्टी। बट जो यंग टर्क्स नॉवेल्टी के थे उन्होंने भी कोई कमी पेशी बाकी नहीं रखी। दे आल्सो प्रेजेंट ए वेरी गुड फुटबॉल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। मौजूद यहाँ पे आइए, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं शरीफुद्दीन, जो आर्को के कोच हैं। चूंकि जो मैन ऑफ द मैच है उन्होंने क्रेडिट कोच को ही दे दिया, तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम। क्या कहना चाहेंगे इस गेम के हवाले से? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हमने ये गेम जीती है। तो गोलकीपर ने बहुत मेहनत की है, अल्लाह ने उसको ये फल दिया है। तो मेहनत जितना भी करेंगे तो उतना भी वो। कितनी खुशी महसूस होती है आपको आज, आपकी जो गेम है आप उसके बेताज बादशाह बन गए आज की गेम की? एक्चुअली जो हमारी वो अपोजिट टीम थी उन्होंने अच्छा खेला है, तो हमने भी फिर हाफ टाइम जब हुआ था हमने थोड़ा अंदर जाके चेंज रूम में थोड़ा हमने कुछ चेंज किए, तो उसी हिसाब से उन्होंने लड़कों ने खेला है। इसलिए हमने फिर भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और एक गोल से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी बिलाल साहब हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे इस गेम के हवाले से? देखिए, जो आर्को की टीम है ये 3 साल पहले ये सोपुर की पूरी बेस्ड टीम है, ये श्रीनगर की बेस्ड नहीं है, सोपुर की बेस्ड है। सोपुर की सारी टॉप प्लेयर्स इसमें खेलते हैं। 3 साल पहले हमने इनको जगह दी थी यहाँ पे श्रीनगर में खेलने के लिए, क्योंकि इनका लोहा हमने देखा था जब इन्होंने सारे फाइनल्स वहाँ से जीते थे, तब हमने देखा था कि नहीं, इसमें वो कैपेबिलिटी है कि ये यहाँ की टीमों के साथ compete कर सके, और उस उम्मीद पर ये पूरे खरे उतरे हैं आज तक। और मैं देखता हूँ कि ये जो आर्को की टीम है ये फाइनल लिस्ट की रनर में हमारी फेवरेट टीम है। और जो नॉवेल्टी टीम है, आप जानते हो कि नॉवेल्टी इस जो लीग में थी वो लास्ट में आ गई। नॉवेल्टी की टीम, नॉवेल्टी टीम ने लास्ट में अपने प्लेयर्स को कंबाइन किया और फैसला किया कि हम भी ये लीग खेलेंगे। इस वजह से उनका थोड़ा अभी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अभी कमज़ोर है। लेकिन आर्को को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं कि इन्होंने वहां से आके एक ट्रैवल करते हैं दूर से, इतना सोपुर से आके फिर मैच खेलना, फिर वापस जाना, ये इनके लिए, हमारे लिए बड़ी खुश आमदी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका। हमारे साथ आबिद साहब पांपोर से आए हुए हैं, तो इस गेम का बगौर मुशाहिदा इन्होंने किया, ये भी स्पोर्ट्स लवर है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे इस गेम के लिए आए, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं इनको बधाई देता हूँ आर्को टीम को,
और जो भी अच्छा खेल गए मैदान में तो जीत तो उससे होता है। और आपका ही बताया देता हूँ कि आपने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, यहाँ पे जितने भी यहाँ ऑर्गेनाइज है इसकी टीम पे, और जितने भी हमारे प्लेयर यहाँ पे बूस्ट हो रहे हैं, ये हमारे कश्मीर के लिए अच्छा है। ये बहुत अच्छा चीज़ है कश्मीर के लिए, क्योंकि हमारे यूथ इसमें बिज़ी हो रहे हैं। और जो हमारे यूथ बाकी यूथ जो ड्रग्स कर रहे हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं, आप आ जाओ इसमें खेलने के। ये सब के लिए अच्छा रहेगा हम के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आप सभी जो जूरीज हैं, जो हमारे मेहमान हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने नाज़रीन को बताते चले जो कल का गेम है, कल भी हम आपको ये बताते चले, कल दिन में भी एक ही गेम यहाँ पे होने वाला है। तो हमारी नाज़रीन और शायकीन से यही दरख्वास्त है कि कल 4 बजे से पहले यहाँ पे पहुँच जाएगी। 4 बजे गेम शुरू होने वाला है। तो कल इसी मैदान से आपसे फिर से मुखातिब होंगे, जो लाइव ट्रांसमिशन है आप तक पहुँचाया जाएगा। दीजिए कल तक अपने मेज़बान मुदस्सिर मंजूर को इजाज़त, तब तक आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।